Malady and Remedy, on the collegium system of judicial appointments. Holding back names is not the right response to flaws in collegium system. The Hindu Editorial, November 19, 2022. Subscribe our channel, The Hindu Editorials, for more upcoming new videos. Like, subscribe, share and comments. The collegium system of making appointments to the higher judiciary has come under focus, largely due to critical remarks made by Union Law Minister Kiren Rijiju. A lawyer has now formally approached the Supreme Court for reconsideration of its 2015 judgment striking down the Constitution Amendment and the law creating a National Judicial Appointments Commission, NJAC. While the petition will be listed in due course, there is another aspect that flags the tension between the government and the judiciary over judicial appointments. A bench of the court voiced its displeasure over the government delaying its recommendations for appointment, as well as ignoring names that had been reiterated twice or even thrice. The result was that lawyers whose names had been recommended for appointment had withdrawn their consent to be judges. The bench was forced to observe that keeping the recommendations on hold was some sort of a device to compel these persons to withdraw their names. The government's keenness to wrest back the power to make judicial appointments from the judiciary is clear. However, it is doubtful whether this can be achieved by a review petition. The 4:1 verdict can only be reviewed by a bench of equal strength, and the government has not sought a review all these years. Mr. Rijiju did say, as part of his series of comments critical of the collegium system, that the government had accepted the decision, but added that it could not be silent forever over the opaqueness and lack of accountability in the system. Much of the criticism heaped upon the collegium system is not unfounded. It is opaque, it does limit the zone of consideration to those known to its members and judges who are consulted on appointments, and there is no indication that it is conducive to attracting the best legal talent. Some maladies it was supposed to remedy, mainly, the perception about the executive's influence over the judiciary, persist. Even the judgment that struck down the 99th Constitution Amendment and the NJAC Act accepted that there were flaws, but the majority chose to retain the collegium system until it was improved. The exercise to improve it was also abandoned soon. However, if the government is really keen to bring about a change, the petulant response of stalling appointments is not the way. It has to work towards an alternative mechanism, one that does not have the perceived infirmities that led to the invalidation of the earlier law. The NJAC mechanism enabled the outnumbering of judicial members by executive nominees. A better system than the present one should avoid such pitfalls in the name of executive primacy in judicial appointments. उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियां करने की कॉलेजियम प्रणाली मुख्य रूप से केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा की गई आलोचनात्मक टिप्पणियों के कारण चर्चा में आ गई है। एक वकील ने अब औपचारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट से संविधान संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) बनाने के कानून को रद्द करने के 2015 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए संपर्क किया है। हालांकि याचिका को उचित समय पर सूचीबद्ध किया जाएगा, लेकिन एक और पहलू है जो न्यायिक नियुक्तियों पर सरकार और न्यायपालिका के बीच तनाव को दर्शाता है। न्यायालय की एक पीठ ने नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिशों में देरी करने के साथ साथ 2 या 3 बार दोहराए गए नामों की अनदेखी करने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। नतीजा यह हुआ कि जिन वकीलों के नामों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई थी, उन्होंने न्यायाधीश बनने के लिए अपनी सहमति वापस ले ली थी। पीठ को यह देखने के लिए मजबूर होना पड़ा कि सिफारिशों को रोककर रखना इन व्यक्तियों को अपना नाम वापस लेने के लिए मजबूर करने का एक उपकरण है। न्यायपालिका से न्यायिक नियुक्तियां करने की शक्ति वापस लेने के लिए सरकार की उत्सुकता स्पष्ट है। हालांकि यह संदिग्ध है कि क्या पुनर्विचार याचिका से इसे हासिल किया जा सकता है।
4:01 के फैसले की समीक्षा केवल समान संख्या वाली पीठ द्वारा की जा सकती है और सरकार ने इन सभी वर्षों में समीक्षा की मांग नहीं की है। श्री रिजिजू ने कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना करने वाली टिप्पणियों की अपनी श्रृंखला के हिस्से के रूप में कहा कि सरकार ने निर्णय को स्वीकार कर लिया है, लेकिन यह भी कहा कि वह प्रणाली में अपारदर्शिता और जवाबदेही की कमी पर हमेशा के लिए चुप नहीं रह सकती है। कॉलेजियम प्रणाली की ज्यादातर आलोचना निराधार नहीं है। यह अपारदर्शी है। यह अपने सदस्यों और न्यायाधीशों के लिए ज्ञात लोगों के लिए विचार के क्षेत्र को सीमित करता है, जिन्हें नियुक्तियों पर परामर्श दिया जाता है, और इस बात का कोई संकेत नहीं है कि यह सर्वोत्तम कानूनी प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए अनुकूल है। कुछ विकृतियों को दूर करने के लिए इसे माना जाता था। मुख्य रूप से न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रभाव के बारे में धारणा बनी हुई है। यहाँ तक कि 99वें संविधान संशोधन और एनजेसी एक्ट को रद्द करने वाले फैसले में भी स्वीकार किया गया कि खामियां थी, लेकिन बहुमत ने कॉलेजियम प्रणाली में सुधार होने तक इसे बनाए रखने का विकल्प चुना। इसमें सुधार की कवायद भी जल्द ही छोड़ दी गई। तथापि यदि सरकार वास्तव में परिवर्तन लाने की इच्छुक है, तो नियुक्तियों को रोकने का तीव्र प्रतिक्रिया कोई तरीका नहीं है। इसे एक वैकल्पिक तंत्र की दिशा में काम करना होगा, जिसमें कथित दुर्बलताएं नहीं हैं, जो पहले के कानून को अमान्य करने का कारण बनी। एनजेसी तंत्र ने कार्यकारी नामितों द्वारा न्यायिक सदस्यों की संख्या को कम करने में सक्षम बनाया। वर्तमान व्यवस्था से बेहतर व्यवस्था को न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की प्रधानता के नाम पर इस तरह के नुकसान से बचना चाहिए। Subscribe our channel, The Hindu Editorials, for more upcoming new videos. Like, subscribe, share and comments.